Corpus delicti, corpus delicti, delicti. Proceeding so as to aid in the administration justice. So administration aid in administration justice.
corpus delicti था तो normal management removal next arsenic cholera signs and symptoms carbolic acid poisoning antidote stomach wash desiccation of poison magnetons criminal responsibility civil mental disorder lucid impulse illusion hallucination delusion sexual offense rectal criminal abortion also grievous hurt antenatal postmortem burn thermal injury extradural epidural counterpart corpse skull fracture intriguing abrasion of collar firearm lacerated one bruise pressure breeze scratch abrasion turn lantern get rest test fresh water running seawater emphysema metabolic encephalopathy then drowning throttling hanging strangulation classification and then hanging asphyxia then we had the addition with corpus dictum corpus dilatin corpus dictum Casper dictum is different corpus delicti corpus delicti we have the essential these are the essential facts essential facts that prove a crime has been committed 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 What is forensic medicine? Forensic medicine is the application of principle and knowledge of medical science. Forensic medicine is the application. Forensic medicine is the application of principle and knowledge of medical science for the purpose of law, law and legal proceedings. For the purpose of law and legal proceedings, so as to aid in the administration, justice. What is forensic medicine? Forensic medicine is the cure. Forensic medicine is the application of principle and knowledge of medical science. For what? For the purpose of law. Forensic medicine. What is forensic medicine? Is the application of principle and knowledge of medical science for what?
administration justice has to aid in administration justice. Has to aid in administration. Has to aid in administration justice. Now here was corpus delicti. Corpus delicti, the language of corpus means body, and delicti means of offense and crime. Corpus delicti.
means we have gonadal cells and medical cells, endothelial cells, nuclear cells, gonadal cells, chromosomal cells, and we have concealed cells. Our phenotypic cells depends on the physical morphology. Nuclear cells will be from sex chromatin, and concealed cells divisions with their sex activity. In concealed cells, a person
Bomb blast, you are the adopted only. You are the manager of my YouTube channel also. अब और कितना adopt होना है तुमको? Now मैंने अभी 1 घंटे में जितना पढ़ा वो थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी विल रिकैपिचुलेट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाइवा में मेन क्वेश्चन है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर वाइवा राइट नाउ. सो वाइवा का जो मेन क्वेश्चन है उसको अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वो मैं समराइज करके बताती हूँ. टॉपिक इज़ ऑब्वियसली फॉरेंसिक मेडिसिन, बिकॉज उसी का वाइवा आ रहा है. So now what is forensic medicine? Basically forensic medicine is application of this principle and knowledge of medical science for the purpose of law and legal proceedings, so that there will be, you know, क्या बोलते हैं उसको, there will be aid in administration justice. Okay, administering justice. Now in human आइडेंटिफिकेशन, जब हमको एक बॉडी आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अगर उसमें एक अगर क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है, फॉर देयर इज़ दिस लैटिन वर्ड called corpus delicti. Okay, corpus means body and delicti means of crime. So corpus delicti means body of crime. ये क्या करता है is this corpus delicti, it gives us essential facts which proves that a crime has been committed. Okay, so this corpus delicti हम कैसे फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, इसमें देयर आर सम फैक्टर्स विच विल हेल्प अस इन आइडेंटिफिकेशन कि ये कौन सा रेस का है वगैरह वगैरह. ओके, सो फॉर दिस the factors which are helpful in identification, there are 2 factors basically. One is the definite factors, or the what do you say, complete identification, which helps in complete identification, and there are some incomplete factors or presumptive factors which helps in थोड़ा थोड़ा ही identification. Okay, now in incomplete identification we have race, sex, stature and age, whereas in complete or definitive identification we have dactylography. Dactylography is also known as the hand ka fingerprints, and this is the most reliable factor which will help you in identifying the person. Second thing is DNA fingerprinting. Third thing is scars, tattoo marks and superimposition. Now to identify race, we have basically 3 types of race. One is negroid, caucasoid and mongoloid. Now the factors which will help us in identifying a race of a person, they are skin color, hair texture, iris color, bone and the teeth or dentition. Now इनमें से भी सबसे मेन है bone and dentition. Now bone में we have 4 further important factors which is known as brachial index, we have this crural index, we have cephalic index and we have intermembral or the intramembral index. Now this brachial index जो है which will help you identify from the upper limbs. ये upper limbs से you can identify a person. In crural index we'll identify a person through their lower limbs, and in cephalic index we can identify a person through the skull, and it is the most important and best index for identification. Now this cephalic index, इसका एक formula है to find out cephalic index. ये the formula is, first we take the maximum breadth of the skull divided by maximum length of the skull into 100, and this measurement is done by vernier calipers. Now after you take the cephalic index usually 3 ranges के बीच में आता है. 170 to 74.5 के रेंज में
देन वी हैव 75 to 79.5 के रेंज में, देन वी हैव 80 to 85 के रेंज में. इफ़ 70 to 74.5 के रेंज में अगर आया तो वी कॉल इट डोलिकोसेफेलिक. 75 to 79.5 के रेंज में आया देन इट इज़ मेसेटिसेफेलिक. एंड 80 to 85 तक आया है तो ब्रेकिसेफेलिक. Now this dolichocephalic head skull is found in Aryans and Africans. And the mesocephalic head, it is seen in Indians, Chinese and Europeans, whereas the brachycephalic is seen in Japanese. Now when we move towards dentition, now when we move towards dentition, डेंटिशन में भी वी हैव दिस, एक तो नेग्रेट, कॉकसॉइड और मंगोलॉइड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उससे में डेंटिशन हैज़ बिन डिवाइडेड. नाउ टीथ देख के अगर तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कोई नेग्रॉइड है तो उसका नॉर्मल से बड़ा टूथ साइज़ होगा और उसका कस्प्स भी बड़ा होगा. एंड देन वी हैव कॉकसॉइड. Caucasoid there will be an extra cusps on the teeth, and this will be known as carabelli cusp. And then we have mongoloid. Mongoloid को आइडेंटिफाई करने के लिए teeth के थ्रू we have this mnemonic called paste. इसमें क्या होता है is one there will be pointed canines. Mongoloid में canines pointed होता है. There will be absence of molars. There will be shovels shaped incisors, torodontism is seen, and enamel pearl बोल के एक substance will be seen. There will be additional nodule on the enamel which will be known as enamel pearl. Now for sex determination. अभी तो रेस डिटरमाइन कर रहे थे, अब इसमें से लड़का है कि लड़की है वो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए देर आर 5 वेज. एक तो है फिनोटिपिक सेक्स जिसमें फिजिकल मॉर्फोलॉजी के मुताबिक यू विल आइडेंटिफाई. एक है न्यूक्लियर सेक्स जिसमें तुम सेक्स क्रोमैटिन से आइडेंटिफाई करोगे. एक है गोनाडल सेक्स. देन वी हैव द क्रोमोसोमल सेक्स एंड वी हैव दिस कंसील्ड सेक्स. नाउ इन कंसील्ड सेक्स क्या होता है, ये क्या होता है मतलब एक इंडिविजुअल दैट पर्सन विल ट्राई टू हाइड देयर सेक्स एंड इट इज़ डन फॉर क्रिमिनल मोटिव. सो ये है डिफरेंट टाइप्स कैसे हम सेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ जो न्यूक्लियर सेक्स था जिसमें सेक्स क्रोमैटिन से आइडेंटिफाई करने वाले थे हम, दे आर यूजुअली ऑफ 2 टाइप्स. 2 क्रोमैटिन है ऐसा जिससे हम सेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक है बार बॉडी और एक है डेविडसन बॉडी. ये बार बॉडी शायद नीट यूजी में भी है शायद इसका वो कुछ जेनेटिक्स वगैरह के चैप्टर में. चीकू व्लॉग्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके. एंड शेरलॉक गेमर दोनों से सब्सक्राइब करना. फिर तुमको जब पढ़ने का मन नहीं हो या फिर मोटिवेशन नहीं हो तो यहाँ पे आ जाना, कर लो. और ये ड्राइव थ्रू also, if you are still here in the channel watching my video, please subscribe to my channel. It will help me increase my this thing reach, right? Now bar body and Davidson body. जो bar body है, bar body is basically an inactivated X chromosome which is seen in फीमेल सोमैटिक सेल्स. ना हमारे सेल में एक तो जर्म सेल होता है और एक सोमैटिक सेल होता है, नीट यूजी में भी है. और जो बार बॉडी होता है
वो बेसिकली एक एक्स सेल है विच इज़ नॉट एक्टिवेटेड एंड इज़ अ सोमैटिक सेल। और ये दिखने में कैसा आता है, प्लेनो कन्वेक्स मास। एक प्लेनो कन्वेक्स मास होता है, इट विल बी नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसको हमको देखने के लिए वी प्रिपेयर अ स्मीयर, यूजुअली इट इज़ फ्रॉम द बकल साइड, मुंह के अंदर से बकल स्मीयर बनाते हैं हम। और ये मेल में 0 to 4% ही होता है, बट फीमेल में 20 to 80% हो सकता है, होने का चांसेस होता है बार बॉडी का। नाउ डेविडसन बॉडी। डेविडसन बॉडी क्या, एक न्यूट्रोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल में देयर विल बी अपेंडेजेस अटैच्ड। तो ये अपेंडेज जो न्यूट्रोफिल में अटैच्ड है, इसको हम डेविडसन बॉडी बोलेंगे। और ये एक ड्रम स्टिक की तरह दिखता है, इट इज़ सीन लाइक ड्रम स्टिक। और इसको देखने के लिए जो स्मेयर बनाते हैं हम, इसको बोलते हैं हम पेरिफेरल स्मेयर। ये मेल में सिर्फ 0% होता है, बट फीमेल में इट इज़ लाइक 6%। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग बार बॉडी इन अ पर्सन? क्या करना है, बस नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है उसमें बस -1। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 विल गिव यू हाउ मच बार बॉडी इज प्रेजेंट, ओके, इन दैट पर्सन। तो अगर बार बॉडी 20 to 80% अगर हमको मिल गया देखने पर भी इन द स्मीयर, देन द पर्सन इज अ फीमेल, even though that person is pretending to be a male, right? So now there is something called transvestism. So people usually get confused between transvestism and concealed sex. इन दोनों का थोड़ा सिमिलर दिखता है, बट डिफरेंस हम कैसे करेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द मोटिव अ पर्सन हैज़, ओके। जो कंसील्ड सेक्स होता है, इसमें अ पर्सन विल कंसील देयर सेक्स ऑन अ क्रिमिनल मोटिव। एक सर्टन मोटिव होता है, क्रिमिनल मोटिव होता है, बिकॉज ऑफ दैट दे विल चेंज देयर सेक्स, आइडेंटिफाई ना हो इसलिए। एंड ट्रांसवेस्टिज्म में ऐसा होता है कि इंसान लड़का ही होता है बट लड़की बनने के प्रिटेंड करता है, बट इट इज़ नॉट फॉर क्रिमिनल मोटिव। ये सिर्फ एक सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए ही होता है, इट इज़ नॉट फॉर क्रिमिनल मोटिव, ओके। नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ पर्सन if the person is male or female based on the skeleton they have, skeletal remains, okay. इसमें भी we have 12 major like factors or characters which will help in identifying, which I'll tell you in after a while. I'll study first.
Yahoo! Now I'll speak about examination of skeletal remains. Like you examine the skeletal remains and then try to identify if a person is male or female. Now, earlier I said that for identifying a person is a male or female through a skeletal remains,
we have 12 basic characters which helps us in identifying. So, first one is the muscle marking or prominence or ridges in the skeleton. If you find muscle, obviously you will find a muscle marking ridges and prominence, but if the muscle marking and ridges they are more prominent, it is basically a male skeleton, and if it is less prominent, it is female skeleton. Now we have some exceptions here, that is the frontal eminence, parietal eminence, and the preauricular sulcus. Frontal, parietal, and preauricular sulcus, it is more prominent in female, but rest all of the part is more prominent in males and less prominent in female. Now we move towards the shape of the bone. If the bone is square shaped, it is male bone. If it is round shape, it is female bone. Now out here also we have an exception. This is obturator foramen. This obturator foramen, it is usually circle in male and triangle in female. Now moving on towards the angle of bone. This angle of bone, this angle of bone, it is less obtuse in male and more obtuse in female. Like if you look at the mandible co-angle, male has less than 125 degrees, but female will have more than 125 degrees. And similarly in subpubic angle, male has less than 90 degree and female has more than 90 degree. Now when we move towards the indices, male को one important indices is just cerebrobasal index, but in female there are many important indices. They are the sternal index, sacral index, istiopubic index, and sciatic index. Now to find out the cerebrobasal index, we measured the breadth of the first sacral vertebra by base of the sacrum. Breadth of first sacral vertebra by breadth of base of the sacrum into 100. This will give you the cerebrobasal index, and this is important in males. It's not that important in female. Now when we move towards forehead, males will usually have a slopey forehead, but female will have a vertical forehead. In acetabulum, male will have large acetabulum and female will have small. Now when we move toward the pelvic bone, if you see a heart-shaped pelvic inlet, then that is a male skeleton. But if you see a circular pelvic inlet, that is a female bone. And in pelvic cavity, if you see a funnel shaped pelvic cavity, that is a male bone. And if you see a flat or bowl shaped pelvic cavity, that is female. Now this circular pelvic inlet and flat or bowl shaped pelvic cavity, they are important so that when a woman gives birth, there is enough space for baby. Now now you move towards the ischial tuberosity. Ischial tuberosity is narrow and deep in male, whereas it is wider and shallow in female. And there is a greater sciatic notch, which will give you 75% surety of if a person is male and female. This greater sciatic notch, it is narrow and deep in this male and wider and shallow in female. Sorry, this ischial tuberosity, which I am saying, ischial tuberosity is inverted in male and everted in female. Now there is one important thing called kylotic line index. Now भूख तो मुझे भी लगा है. Kylotic line index. And kylotic line index, we have the sacral part divided by pelvic part into 100. We have sacral part divided by pelvic part into 100. Now how do you find this kylotic line? A line is drawn from istiopubic ramus to this anterior articular margin, and then it is moved towards the iliac crest. Now this line is known as kylotic line.
And kylotic line, the formula is the sacral part divided by pelvic part into 100. And this sacral part, it is usually greater in male, and the pelvic part is greater in female. Now when we move towards sacrum, sacrum, if it is a male sacrum, it will have uniform curvature. It will be like this uniform curvature, ऐसा uniform curvature होगा. And क्या बोलते हैं उसको, जो promontory होता है ऊपर पे, that is also prominent. And in female, जो यूनिफॉर्म कर्वेचर था मेल में वो नहीं होगा. फर्स्ट हाफ विल बी स्ट्रेट एंड बाकी का विल बी कर्व्ड towards the inner side, curved towards the inner side. Also the promontory is not that prominent. Now when we move towards the sternum, a male sternum को length which includes the body of sternum and manubrium, the male sternum को length will be more than 149 millimeters and female को will be less than 149 millimeters. This is also known as Ashley's rule of 49. Now outer, there is one law known as Hyrit's law. This Hyrit's law states that if the body of sternum is twice that of manubrium, then it is sure that the sternum is that of a male, and vice versa. Like if the the manubrium जो double करने पे, then the body of sternum बॉडी ऑफ स्टर्नम से कम हो तो फिर दैट इज़ अ फीमेल स्टर्नम. नाउ हाउ एक्यूरेट योर predictions will be, how your predictions of the skeleton, if it is a male or female, would be. It depends on three things. If you find the skeletal remain, if the skeletal remain you found is a pelvis, then you can be 95% sure of the person's sex. If the skeletal remain you found is a skull, you will be 90% sure. Whereas if you find long bones of a skeletal remain, then you will be 80% sure of the person's gender. Okay. Now, the best bone which will help you identify uh, the gender of the skeleton is obviously pelvis, because it mounts for 97%, and the best bone amongst the long bones is femur. Pelvis is called the best bone because pelvis will help you identify, the pelvis will help you identify even if the identify the gender, even if the body is that of a fetus or a baby. Okay. Now we have a certain thing known as Krogman's accuracy. This Krogman's accuracy states that if pelvis and skull is found, या फिर pelvis and long bones is found, तब you'll have 98% accuracy of of the skeleton's gender. But if you find complete bone, then obviously it's 100%, right? Oh my god. Yeah, so this is how you examine the gender of a person by looking at their skeletal remains. So what all did we do till now? First, we spoke what is forensic medicine. Then we spoke about corpus delicti. What is corpus delicti? It is the essential fact that proves that crime has been occurred. Now, in corpus delicti, for identification, we had incomplete or presumptive identification, and we have the definitive or the complete identification. In incomplete identification, we had sex, race, age, and stature. In definitive, we had dactylography, DNA fingerprinting, scars, tattoo marks, and superimposition. Now, in race, we had three races: negroid, coxoid, and mongoloid. And the factors which help us in identifying race is skin, hair texture, iris color, bone, and dentition. Now, in bone also we have four important index: brachial index, crural index, cephalic index, and intermembral index. Out of which cephalic index is the most important. The formula would be maximum breadth of the skull by maximum length of the skull into 100. And the length and breadth is measured by vernier calipers. Now, this cephalic index will give you three major ranges. One would be 70 to 74.5,
75 to 79.5 and 80 to 85. If the measurement comes between 70 to 74.5, then it is dolichocephalic. This kind of skull is seen in Africans and Aryans. 75 to 74.5, it is mesocephalic, and this kind of skull is seen in Indians, Europeans, and Chinese. And if it is between 80 to 85, it is brachycephalic, and this is seen in Japanese. Now moving on to the dentition. In dentition, also to identify if the person is negroid, caucasoid, or mongoloid. First thing, in negroid, if a person is negroid, their tooth size will be more and their cusp size will also be more. In caucasoid, they will have an extra cusps known as the carabelli cusp, which is not seen in other two race. Whereas in mongoloid, they have sharp incision. Then we have they have this not sharp, I'm like pointy incision, so not incisor, pointy canines. Then they have there's absence of molars, the shovel incisors will be there, there will be taurodontism, and enamel pearl will be seen. Now for this was this thing ना, presumptive identification में रेस ख़त्म कर लिया और सेक्स भी ख़त्म कर लिया. अभी सेक्स में कैसे आइडेंटिफाई करना था, 5 टाइप्स से, एक फिनोटिपिक सेक्स, गोनाडल सेक्स, क्रोमोसोमल सेक्स, कंसील्ड सेक्स एंड न्यूक्लियर सेक्स. फिनोटिपिक सेक्स सिंपल फिजिकल मॉर्फोलॉजी देख के आइडेंटिफाई करोगे. न्यूक्लियर सेक्स में सेक्शुअल क्रोमैटिन से आइडेंटिफाई करोगे. एंड कंसील्ड सेक्स इज दैट व्हेन अ पर्सन विल हाइड इट्स sex or gender for a criminal motive. न्यूक्लियर सेक्स दो में डिवाइड हो रहा है. एक दो चीज़ से पता चल रहा है, एक बार बॉडी, एक डेविडसन बॉडी. अब ये बार बॉडी क्या है, एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम विच इज़ प्रेजेंट इन द फीमेल सोमैटिक सेल. ओके, इट इज़ प्लेनो कन्वेक्स इन, देखने में इट इज़ अ प्लेनो कन्वेक्स मास और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में रहता है. एंड उसका अगर स्मेयर बना के देखना है तो यू हैव टू मेक अ बकल स्मेयर एंड सी. मेल में 0 to 4% होने का चांस है, फीमेल में 20 to 80% होने का चांस है. एंड इन डेविडसन बॉडी वो क्या होता है, वो एक न्यूट्रोफिल में अटैच्ड होता है अपेंडेज बन के, और वो एक ड्रमस्टिक अपीयरेंस में होता है. एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ स्मियर एंड सी दिस डेविडसन बॉडी, यू हैव टू मेक अ पेरिफेरल स्मियर. इस मेल में ये डेविडसन बॉडी होने का चांस है 0%, फीमेल में इट इज़ 6%. Now how do you find a bar body? Number of X chromosome -1, इतना ही है. Now ट्रांसवेस्टिज्म और कॉन्सिल्ड सेक्स में डिफरेंस क्या है? कॉन्सिल्ड सेक्स में ये होता है कि अ पर्सन विल हाइड देयर सेक्स और जेंडर फॉर अ क्रिमिनल मोटिव, बट ट्रांसवेस्टिज्म में अ पर्सन विल ट्राई टू बी ऑफ ऑपोजिट जेंडर फॉर देयर ओन पर्सनल सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन. ओके, नाउ सेक्स तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सेइंग द स्केलेटल रिमेन्स ओके ऑफ अ बॉडी. इसमें मसल मार्किंग्स, प्रोमिनेंस, रिजेस ये ज़्यादा होता है मेल में एंड फीमेल में कम होता है. दूसरा शेप, मेल का स्क्वायर शेप होता है, फीमेल का होता है राउंड. एंगल, मेल का लेस ऑब्ट्यूज, फीमेल का मोर ऑब्ट्यूज. इंडाइसेस, मेल का है सेरिब्रो बेसिलर बेसल इंडेक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फीमेल का है सैक्रल, स्टर्नल, सियाटिक और इस्चियोप्यूबिक. नाउ कॉर्पोरो बेसल तुम मेल में कैसे फाइंड आउट करोगे? करना है ब्रेथ ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा बाय द बेस ऑफ सैक्रम इनटू 100, ये करना है. फिर फोरहेड, फोरहेड देख के मेल का स्टोपी फोरहेड होता है, फीमेल का वर्टिकल होता है. वो एसिटाबुलम मेल का लार्ज होता है, फीमेल का स्मॉल होता है. पेल्विक इनलेट मेल का हार्ट शेप्ड होता है, फीमेल का सर्कुलर. पेल्विक कैविटी मेल का इट इज़ ट्रायंगुलर, नॉट ट्रायंगुलर, व्हाट इज इन्वर्टेड ट्रायंगुलर और फनल शेप्ड. और फीमेल का है फ्लैट बोर्ड शेप्ड. इस्चियल ट्यूब्रोसिटी मेल का इन्वर्टेड, फीमेल का इवर्टेड. ग्रेटर शियाटिक नॉच मेल का नैरो, फीमेल का wider and shallow. Now there is an important thing known as kylotic line index. Kylotic line index में क्या करना है? Sacral part divided by pelvic part into 100. Kylotic line कैसे ढूंढेंगे? It is a line drawn from the iliopubic ramus to anterior articular this thing margin, articular margin, उसके बाद iliac crest. ये सब का length add up करना है. This will give you kylotic line. Now kylotic line
में जो पेल्विक एंड सेक्रल पार्ट है, पेल्विक पार्ट यूजुअली फीमेल्स का बड़ा होता है एंड सेक्रल पार्ट मेल्स का होता है. नाउ व्हेन यू मूव टुवर्ड्स सेक्रम, सेक्रम मेल का यूनिफॉर्मली कर्व्ड होता है और जो प्रोमेंटरी होता है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होता है. वेराज इन फीमेल जो सेक्रम पार्ट होता है उसका फर्स्ट हाफ स्ट्रेट होता है और द सेकेंड हाफ वो कर्व्ड होता है और कर्व्ड इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड्स. ओके. एंड जो प्रोमोन्टरी का प्रोमिनेंस होता है दैट इज़ लाइक दिस इज़ नॉट दैट प्रोमिनेंट, तो दैट विल मेक इट श्योर दैट वो सेक्रम फीमेल का है. नाउ व्हेन वी मूव टुवर्ड्स स्टर्नम, स्टर्नम का हम लेंथ देख आइडेंटिफाई करेंगे कि मेल है या फीमेल है. जो मेल स्टर्नम होता है वो 149 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है और फीमेल का 149 मिलीमीटर से कम होता है. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एशलीज रूल ऑफ 149. जो स्टर्नम का लेंथ you'll measure, you will include the manubrium and the body of sternum. Now there is this important law out here known as Hyrit's law. This Hyrit law, it states that if the body of manubrium is twice the body of sternum, then that sternum male का है. Okay, simple. Now how accurate your sex determination will be on the basis of what bone you found. If you have found pelvis, it will be 95% accurate. If it is क्या बोलते हैं, if it is skull, then it is 90%. If it is long bones, then it is 80%. Now if you find now the thing is the best bone which will help you identify the gender of a skeleton is pelvis, because pelvis से तुम एक बेबी का और fetus का भी gender identify कर पाओगे. And the best long bone which will help you identify if the skeletal is that of a male and or that of a female, that is a femur, thigh bone. Okay. Now there is something called Krogman's accuracy. Krogman's accuracy, it will say that if you found pelvic and skull in the skeletal remains, then it will give you 98% accuracy in your gender. If you found pelvis and long bone, it will also give you 98%. And if you find this क्या बोलेंगे उसको पूरा complete bone, then it is 100%. It gives you 100% accuracy. ये सब हमारा ये हो रहा था ना, क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन हो रहा था और प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन. इसमें हम एक और एज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दिस वन वी विल स्टडी. उसके बाद वी विल कम टुवर्ड्स द डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन. डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन में क्या था, वी हैव द फिंगरप्रिंट्स, दैट इज़ हमारा फिंगरप्रिंट को क्या बोलते हैं, डैक्टिलोग्राफी. Then we have the thumbprint, sorry, DNA printing. Then we have this scars, tattoo marks, superimposition, and lip print or chyloscopy. Guys, please मेरा channel subscribe कर दो if you are a new viewer out here, and like my stream also. It will help me reach, it will help me get reaches also. मतलब मेरा क्या बोलूँ,
Thank you. तुम सब किसी को, do you have any idea how do you put this night bot in your channel? There's this bot no usually in live stream जो हेलो मतलब जो लोग आता है तो ग्रीट करता है and it's like telling people to subscribe and like and they're greeting hello good morning this that and all. ऐसा ऐड करने वाला बॉट होता है ना, नाइट बॉट. How do you add that in your channel? Does anyone have any idea? Please teach me that. अब फिर मैं लंच करने जा रही हूँ. जब मुझे कुछ पूछना होता है तो व्यूज़ ही नहीं है. 3% व्यू है. अब इनमें से किसको पूछूं कि नाइट बॉट लाता है कि नहीं. एक वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई तो था. अरे वो बॉम्ब ब्लास्ट तुमको तो पता होगा तो बताना मुझे. आयनावा को भी पता होगा. जो आईटी वाले लोग. अरे मैं बोल रही हूँ जो यूट्यूब लाइव होता है ना एक बॉट जो लाइक वो करता है when new people come subscriber and all तो वो ग्रीट करता है and they will like inform them to लाइक करना सब्सक्राइब करना हेलो ये वेलकम. ये ग्रीट करने वाला बॉट होता है ना नाइट बॉट जो यूजुअली पीपल के लाइव स्ट्रीम में होता है. वो कैसे डालूँ मैं अपने चैनल पे अपने चैनल के लाइव स्ट्रीम पे. आइडिया होगा ना. हाँ तो बताओ ना कैसे करना है. आज लिप प्रिंट का वाइवा है मेरा. मॉडल भी दिखाना है वीडियो भी दिखाना है पीपीटी भी दिखाना है. 1 मिनट रुकना. माइक ऑफ.
Wait. लन्च गर्यो ए मलाई ल म चाहिँ माथि कोही थिएन कि अनि चाहिँ माथि गएर बटल लिएर आउँछु अरे तिमी लन्च गर्ने भएको होइन बोनसको म्यागी खानु नि थियो 1 बजी मेरो छोरो म्यामले ओके गरेर ओके होममेड पाएँ नि यस्तै लिनु लाउँछ अरे अरे कम्बेट चाहिँ हेलो दी हेलो त्यो एउटा क्लिनिकल र त्यो प्याराक्लिनिकल गर्छ नि प्याराक्लिनिकलमा चाहिँ कम्बेन्ट लगाएर जस्तो गर्छ उसरी होइन के उयसमै आउँछ जस्तो लाग्यो मेजरमै आउँछ जस्तो कम्बेट त उसमा चाहिँ प्यारामा चाहिँ फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको सब्जेक्ट आउँदो रहेछ तिमी के लाउँछौ प्यारामा कुनै लिनु मन चाहिँ बायोकेमिस्ट्री छ कि अनि इजी लाग्छ मलाई बायोकेमिस्ट्री बट हेर्छु अब सिनियरहरूले पनि माइक्रोमा खालि बसिरहनु मात्रै पर्छ हप्तामा एकचोटि भिडियो आउनुपर्छ त्यति हो भन्दै थियो कि माइक्रोलिम जस्तो हुन्छ तर मलाई अलिक डाउट लाग्दैछ अगर माइक्रोस्कोपमा हेर्ने केही काम गरायो भने चाहिँ 1 वर्षसम्म सेडन स्टेनिङ नभएको चाहिँ मेरो त्यति निक्लिन्छ केही लैजानु म्यागी ए अनि म्यागी चाहिँ किन बटाबाट निकालेको छ अलिक एउटा फरक थियो कि भने कि त्यहाँनिर कृष्णा ब्रदर यहाँ देखेर कृष्णा ब्रदर ओ कृष्णा ब्रदर हेलो लाइभ स्ट्रिमिङ गरेको कति भएको guys, this is my mess food. Okay, sure. This is my mess food. My mess food if you didn't heard me. अब मैं रख रही हूँ. Bye bye. We'll study at evening. Okay, bye bye.